Friends, today we will study the last topic of the second chapter, polynomial. It is the factorization by Remainder theorem. Some questions are here for your revision. The first question is we have to find out the factorization of x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Students, observe, this cannot be regrouped or any other formula. We have to use remainder theorem. Here you can see 120. The factors of 120 are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and up to so on. So we have to put first x is equal to 1, x is equal to minus 1, x is equal to 2 and x is equal to minus 2 until the whole the function, the algebraic expression becomes 0. Then let us start. Put x is equal to 1. It will be 1 cube minus 23 1 square 142 into 1 minus 120 means 1 minus 23 plus 142 minus 120. So you can see it will be 143 minus 143, that is 0. So we can say x minus 1 is a factor. Now the next step is we have to divide the given function, the given expression by x minus 1. X cube minus 23x square plus 142x minus 120. We have to divide it by x minus 1. तो डिवाइड करिए, एक्स क्यूब को एक्स से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, चेंज द साइन, it will be minus 22x square 142x minus 120. Now after division we will have minus 22x square plus 22x. After subtraction we will have 120x minus 120. Divide करिए 120 यानी 120x minus 120 minus plus. So we can write x cube minus 23x square plus 142x minus 120 is equal to divisor into quotient. And now this will also be factorized by middle term splitting. 120 के फैक्टर करिए, ऐड करने पे 22 आए, it will be 12 and 10, 12x 10x 120. x minus 1 is common, x minus 12 minus 10 common, x minus 12 and x minus 12 over all common, x minus 10. This will be our answer. Students, similarly one more question. Similarly one more question, x cube plus 4x square minus 5. So factors of 5 are 1 and 5. We have to put first x is equal to 1, then minus 1, 5 and minus 5 until it becomes 0. So put x is equal to 1, it will be 1 cube plus 4 into 1 square minus 5. Yani 1 plus 4 minus 5 is 0. So we can say x minus 1 is factor. Now again divide x cube plus 4x square minus 5. It will be divided by x minus 1. So after division you have x square, मल्टीप्लाई करिए तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, चेंज द साइन, it will be
5x square minus 5. We will have 5x after the multiplication, 5x square minus 5x. Change the sign, 5x minus 5 और ये हो गया आपका 5x minus 5. तो we can write x cube plus 4x square minus 5 is equal to x minus 1 और x square plus 5x plus 5. This is our answer because this term cannot be factorized. Next question is based on one more formula which is given in your NCERT book, and we have studied this formula in our class 8. The formula is x plus a multiplied by x plus b is x square plus a plus b x plus ab. This is one more formula which you have to learn. So using this formula we will solve some questions. See some example. X plus 8, x plus 7. This is x, this is a, this is x, this is b. So we can write x square plus 8 plus 7x, 8 into 7, and x square 15x plus 56. The next is 2x plus 5 and 2x minus 3. Using this formula, x a, x b. So x square plus 5 minus 3 into 2x, 5 into minus 3. It will be 4x square, 5 minus 3, 2, 2 into 2, 4x minus 15. Similarly, one more, 305 into 308. It can be written as 300 plus 5, 300 plus 8. Using the formula, we may write x square, that is 300 ka square, 5 plus 8 into 300 plus 5 into 8. It will become 300 ka square 90,000. 5 plus 8 13 into 3 जब हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा 3900. 13 into 300 will become 3900 plus 40. You may add 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 9, now 3 and 9. This will be our answer. Next question, we have to verify x cube minus y cube is equal to. स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये आपको वेरीफाई करना है. तो हम कर क्या रहे हैं, इसमें अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रख लेते हैं. x इज इक्वल टू 2 और x y इज इक्वल टू 1 हम रख रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड जब आप लोगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 दैट इज 7. नाउ राइट हैंड साइड जब हम लेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. 2 माइनस 1 1 हो गया आपका. 4 प्लस 2 एंड प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 7 दैट इज 7. तो यू मे ऑब्जर्व राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल. सिंस
left hand side is equal to right hand side, hence verified. One more question for today. We have to prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. We learn the formula. Based on this formula, we have to show that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half x plus y plus z, और x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर. वी हैव टू प्रूव दिस. स्टूडेंट्स, we are going to start taking right hand side. If we take right hand side, we will have half x plus y plus z, x माइनस y का होल स्क्वायर, y माइनस z का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर. Now expand x plus y plus z. x minus y का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy, y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2yz and z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xz. After simplification, you can see we have x square that is 2x square, y square that is 2y square, z square 2z square minus 2xy minus 2yz and minus 2xz. Take 2 common. If we take 2 common, we have x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. The 2 and 2 cancel out, and this is the formula for x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. This is left hand side and hence proved. So students, this is all for today, and for chapter 2, your classwork and homework is to complete last exercise of the chapter 2, that is polynomial. And students, you must know that your first periodical test has been announced. Therefore, you may prepare for your examination. You should repeat your syllabus for all the subjects. I have sent the syllabus for first periodical test. So be alert, repeat your syllabus, and thank you.